हेलो। तो आज हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में, राइट। तो बायोमास एनर्जी में दिया है कि बायोमास इज डिफाइंड एज ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स obtained फ्रॉम प्लांट्स, है ना, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सक्रीट्स, राइट, देन एलेग, है ना, अलगे एंड फंगस, है ना, फूग, मतलब, है ना, वो बोलते हैं फंगस यानी फूग जैसा रहता है। तो उस हिसाब से मतलब हमें बायोमास एनर्जी मिलती है, राइट। ये जो मटेरियल है सब, है ना, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, एक्सक्रीट्स है, एल्गे है एंड फंगस एंड ऑल दैट, राइट। सो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी, है ना। एनर्जी कहाँ से है? बायोमास से मिलती है, तो उसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। सो ऑल एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट है, सच एज प्लांट ले लो, लीव्स ले लो, ट्री लॉग्स ले लो, देन ट्विग्स, देन husks, then municipal waste and animal excreta, then like dungs है उसके, मतलब are included in biomass also, है ना। So energy from biomass can be obtained in many ways. एक तो हम ले सकते हैं कि भाई डायरेक्ट कंबशन ऑफ ड्राइड बायोमास, है ना, डायरेक्ट कंबशन ऑफ dried biomass, right. So this is a primitive method to get heat energy, right. So almost about कितना, मतलब तो 90% of people living in rural area get their cooking energy from biomass. बायोमास की वजह से मतलब वो यूज़ करते हैं, है ना। तो कुकिंग उस पर ही, मतलब खाना पकाना ये सब होता है। तो बाई डायरेक्टली बर्निंग इन द चूल्हे में, मतलब वो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, जैसे कि उपला रहता है वो सब, है ना, बायोमास में, मतलब तो वैसे ही लकड़ी वकड़ी नहीं जला यहाँ पे, मतलब बायोमास जो है, मतलब यूज़ करना है ना। देन बात करते हैं गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास। गैसिफिकेशन कैसे होता है? सो द बायोमास इज कलेक्टेड इन गैसीफायर, है ना। पहले क्या होता है कि बायोमास जो है वो कलेक्ट होता है किस में, तो गैसीफायर, एंड सब्जेक्टेड टू हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। एयर के एब्सेंस में मतलब वो हीटिंग होगा, वो गैस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलिसिस, है ना, उसको हम पायरोलिसिस पे बोल सकते हैं। सो दिस विल प्रोड्यूस अ गैस विच कैन बी यूज्ड इन आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन में होता है ना यूज उसका, एंड अदर डिवाइसेस टू ऑब्टेन मैकेनिकल एंड केमिकल एनर्जी, है ना। जो भी कुछ अदर डिवाइस है उसको हम मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन बायोगैस प्लांट। तो उसमें दिया है कि भाई बायोमास लाइक काउ डंग और एग्रो वेस्ट इज कलेक्टेड इन बायोगैस प्लांट एंड अलाउ टू प्योरीफाई, और है ना, प्योरीफाई फॉर फ्यू डेज, है ना। So decomposition and fermentation of the biomass take in presence of air and microorganism, right. So producing ethane and methane gases, these are combustible gases and can be burned in gas stoves, right. देन बात करते कि भाई नाइट्रोजन रिच वेस्ट फ्रॉम द बायोगैस प्लांट इज गुड मैन्योर्स एंड मैनर्स, राइट, गुड मैनर्स एंड यूज्ड इन एग्रीकल्चर फार्म, है ना। द नाइट्रोजन रिच वेस्ट फ्रॉम द बायोगैस प्लांट इज गुड मैनर्स एंड यूज्ड इन एग्रीकल्चर फार्म्स, राइट। देन बात करते हैं पोटेंशियल कितना है ना, बायोमास ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसने बताया कि भाई इन इंडिया देर इज गुड पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोमास एनर्जी थ्रू बायोगैस प्लांट्स।
और वी कैन से कि भाई प्रॉपरली नोन एज गोबर गैस प्लांट, है ना, गोबर गैस प्लांट भी हम बोल सकते हो उसको। गोबर को जमा करो और वो मतलब टंकी में डालो, मतलब गैस प्रोड्यूस करो, वैसा होता है ना। सो अबाउट 10 to 14 kgs of gobar per cattle is produced, which is sufficient to give 0.46 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस, है ना। इतना मतलब जो इतना वॉल्यूम है वो देगा हमें बायोगैस। So this gas can produce energy equivalent to 1 kilowatt hour when it is burnt. So in rural area of our country, the population of cattle is quite good, है ना, तो वो बहुत अच्छा है। So human waste can also be used as biomass in biogas plants. So community latrines at places like railway station, bus station, or at tourist places where large number of people are collected can feed biomass to generate biomass energy. थोड़ा ऐसा है मतलब, लेकिन लिखना पड़ता है वो तो, है ना, कम्युनिटी लेट्रिन्स एंड ऑल दैट, राइट। बस स्टेशन पे भी रहता है, रेलवे स्टेशन पे भी रहता है, टूरिस्ट प्लेसेस में जहाँ उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ऑल द एनर्जी नीड ऑफ विलेज कैन बी कम्प्लीटली मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल बायोमास, है ना, जो भी लोकली मतलब मिलता है उसके हिसाब से वो करते हैं। सो कोऑपरेटिव रूरल पावर प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन कुरुक्षेत्र इन हरियाणा स्टेट में किया गया है। सो वेयर फ्लोर मिल्स, water pumps for irrigation, street light and domestic lights are using electrical energy produced by biomass only, तो हम बोल सकते हैं। Now the state government subsidy on the loans to the farmers who are constructing biogas plants is also given to promote the use of these renewable sources of energy, हम बोल सकते हैं, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में, है ना। तो टाइडल एनर्जी में दिखा है कि भाई ओशियन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओशन जो है वो एक वन टाइप ऑफ एक सोर्स ही है एनर्जी के लिए, है ना। सो वन ऑफ द फॉर्म्स एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द ओशियन इज टाइडल एनर्जी, है ना, जो मोजा रहता है ना उसका मतलब, है ना, टाइड्स, उसकी वजह से। सो टाइड्स इन द ओकेजन टाइड इज इन द ओशियन आर नेचुरल एंड रेगुलर फेनोमेना, है ना। तो टाइड इज एक्चुअली अ पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल रिजल्टिंग लार्ज मोमेंट ऑफ वाटर मास, है ना। सो उससे क्या होता है कि भाई टाइड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन ऑफ द अर्थ surfaces of ocean, right? So about 70% of tides are produced due to attraction, हाँ, अट्रैक्शन के कारण ही मतलब वो होता है ना, टाइड्स आते हैं मतलब of the moon, and while 30% of tides are produced due to attraction of the sun, है ना। 70% मून के कारण और 30% सन के कारण होता है, राइट। सो thus the moon is a major source of attraction to produce tides, right? So when there is high tide, the water rushes toward seashore, and when there is low tide, water move away from the shore, है ना। तो अब वो भी हम बोल सकते हैं। So the energy containing in this moment of water mass can be converted in electricity in the tidal power plant, है ना। So the major component of tidal power plant are, first of all we can say that the barrage to form a basin of sea water, then turbine, then generator, then slices of wave from basin to sea, है ना, slice from the, we can say that, है ना। So electrical energy can be generated by turbine and generator set which are rotated
by allowing sea water from the basin filled up during low tide by opening the gate or a slice valve, right? So during high tide, basin is filled by the sea water and rushing to the basin, है ना? So during this cycle also the turbine generator can be run to generate electricity. उसके कारण मतलब electricity generate होगी. So suitable graphical site is required to form the basin and instance tidal water movement which is caused by high tides. So tidal range is defined as a difference between water level at such high tides and low tides, and we can say that. So higher the difference in water level and higher the head is available to run the turbine. So minimum useful range of tide is around higher the है ना, अराउंड कितना मतलब तो 3 मीटर जितना होगा. The location of barrage is important because energy available is directly proportional to the trapped water basin size and tidal range, है ना. So gates of water basin are frequently proportional to trapped water basin size and tidal range, right? So rapidly required to be open or close भी हो सकता है. So for this purpose mouth of the bay is selected. जो भी उसका माउथ रहेगा ना बे का, है ना, तो उसका हम सिलेक्ट करना है कि उसके कारण वो मतलब टाइड्स का हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सी वेव एनर्जी, है ना. सो इट इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स that sea waves are very powerful, right? But its power has not been explored effectively so far. So power plant on experiment basis have been made to convert wave energy into electrical. उस पर हम काम कर रहे हैं, है ना. अब बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल ऑफ टाइडल energy. So there is a good potential to generate tidal power in our country. So tidal range at Gulf of Khambat, है ना, and Kutch is about 10⁻⁻7 meters and offer good scope for developing site for tidal power plant, है ना. So in West Bengal at Sundarbans also good tide, है ना, also good tidal range is available. So tidal power plant is without any pollution as it does not require any fuel like coal, है ना, वो भी हम बोल सकते हैं. So it does not require any valuable land as it is in sea. So tides are regular, dependable and precise, unlike other renewable sources like winds and solar energy, we can say that. So however tidal power has some limitations too, है ना. कौन सी लिमिटेशन? तो टाइडल पावर प्लांट रन ऑन अवेलेबल वाटर लेवल डिफरेंस, है ना. जब भी वो वाटर लेवल बढ़ेगा ना तब भी वो हो पाएगा ना, थोड़े थोड़े पर नहीं होगा, है ना. सो इन बेसिन सो इट इज़ इंटरमिटेंट इन ऑपरेशन. सो it cannot generate power continuously as there is time lag to fill up the basin, है ना. बेसिन भर जाएगा फिर बाद में वो विथ सी वाटर हो जाएगा, right? So of course it can be made continuous by multiple basin. Sea water is highly corrosive, so है ना, corrosion वाला नमक वाला पानी रहता है ना, इसकी वजह से ब्राइन्स रहते हैं उसमें. So machines like turbine and generator are greatly affected by corrosion, है ना, वो corrosion से affect हो जाएगा. Lastly हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में. सो एनर्जी प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ के नीचे जो भी कुछ एनर्जी है ना, मतलब इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. सो हॉट मॉल्टन रॉक्स, है ना, जो रॉक्स रहते हैं ना हॉट मॉल्टन, अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट, है ना, उसके नीचे
द अर्थ आर कॉल्ड मैग्मा, है ना। तो मैग्मा के बारे में हमें तो पता है ना, लावा एंड ऑल दैट, राइट। सो दे आर एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो एट सम प्लेसेस दे कम नियर, है ना, कोई जगह पे मतलब वो आएगा तो कम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, द रेन वाटर percolates deep, है ना, so into the earth, है ना, so may find its place to come near to them and get heated, है ना। जहाँ पे मतलब जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है वो जो सिलेक्टेड एरिया है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। सो दिस कॉजेज the rise in temperature of flowing water, so thus hot spring of water is formed, है ना। उसके कारण क्या हॉट स्प्रिंग मतलब फॉर्म में होगी। सो इफ their temperature is increased above boiling temperature, then they may get converted into steam too, right। बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके।